गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलो आ जाओ। नमस्कारम रंगनाथम। वेलकम टू केम। नमस्कारम रंगनाथम, ये हमारा कोड वर्ड है। कम ऑन, कम ऑन। आइए सर, आइए। इट सीम्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सो मैं क्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस सेशन इज, देखो कुछ बातें करना चाह रहा हूं सर। आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर अबाउट 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी हम बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है सर, मुझे पता है। यस, यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। All of you, are you ready? Actually, I came to know that HPCL has given authority to someone to conduct the exam. I don't know whether I'm right or wrong. So most of the questions will be theoretical questions rather than numerical based. So I have taken that into account. So I have given some beautiful questions, sir. मतलब theoretical questions जो HPCL में आ सकते हैं, sir. And I tried my level best to include all subjects: production, industrial, heat transfer, SOM, TOM, then machine design, thermodynamics, applications of thermodynamics, और क्या बचा है, fluid, all subjects I have included, sir. I'm seeing you after a long time. You are looking fresh and happy. Yes, I am so happy. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि so and बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं सर। एंड व्हाई आई एम वर्किंग सो हार्ड इज, मेरा अनुमान है कि गेट 2027 एग्जामिनेशन विल बी द टफ पेपर। ये मेरा गेस है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो इसीलिए आई एम वर्किंग सो हार्ड ऑन न्यू क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस। ऑल आवर क्वेश्चंस आर टफ क्वेश्चंस। केम में जो क्लासेस चल रहे हैं एंड बहुत जबरदस्त चल रहा है। वंडरफुल सर, वंडरफुल, वंडरफुल। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मित्रगणों, एक सेकंड। मित्रगणों, चलो चलो चलो, अभी मजा आएगा सर, अभी मजा आएगा। इस सेशन का बहुत ही, आपको शायद क्या पता, हु नोस, 15-20 क्वेश्चंस एज इट इज आएंगे तो खत्म ही हो गया सर आपका, है ना सर? अगर 15-20 क्वेश्चंस आ गए तो खत्म ही है। ओके सर, चलिए। सो वी आर स्टार्टिंग एट केम, न्यू बैच ऑन 4th May, 4th May। एंड प्लीज, डिस्काउंट, कूपन कोड, ये सब नहीं मिलेगा। सिर्फ कंटेंट मिलेगा आपको केम पे। ओनली कंटेंट, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स विच मेक यू प्रिपेयर फॉर बार्क एवरीथिंग इन वन गो। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव ऑल एट वन प्लेस। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के लिए सेपरेट सोर्स, ऐसा नहीं। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग एट वन प्लेस। वेरी गुड। तो आज मैं आराम से बैठ के पढ़ाऊंगा सर। मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, दोस्तों, अब आइए असली मजा। बोलो एक बार। आजकल जमाना यही चल रहा है। आजकल कंटेंट में ये बोलो तो आएंगे, है ना सर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, चलो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आई हैव गॉट सम 80-85 क्वेश्चंस। सो आराम से करेंगे सर, ब्यूटिफुली। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ गॉड। भगवान के नाम पे शुरू करें। चलो चलो चलो। आई एम स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ गॉड। ओके सर, ओके सर। बोलो सब लोग एक बार, सब लोग एक बार, ओके सर, ओके सर बोलो। अब मैं स्टार्ट करता हूं सर। एवरीवन प्लीज से ओके सर, ओके सर, आई विल स्टार्ट।
Come on, come on, come on. Very good, very good. So, and you know, at KAME, I have completed casting, I have completed calculus, and देखो, calculus is about to finish, and thermodynamics अभी खत्म होने आ रहा है सर, बहुत जबरदस्त questions कर रहा हूं, and SOM is going on. Okay, the next topic is, next we are starting fluid mechanics. On 4th of May we are starting fluid mechanics. Then SOM के place में I'll be starting metal cutting. Okay, चलो. And shall I tell you one shocking information? मेटल कास्टिंग का जो सब्सक्रिप्शन है, इट हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स एंड दे वेर सो हैप्पी. चलिए, अब बड़ापन बंद करेंगे, अब अपना काम करेंगे. मैं कैसा दिख रहा हूं रे? अच्छा दिख रहा हूं ना? दाढ़ी बीड़ी निकाल के अच्छा दिख रहा हूं? बोलिए. दीना बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे. चलो चलो चलो, हर हर महादेव. चलिए, बोलो. कुछ भी नहीं बोलते रे आप. चलो, लेट्स स्टार्ट. आई एम स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ गॉड. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो सर, एक बात बताता हूं मेरे प्यारे सज्जनों. लुक एट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी थियोरेटिकल. जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आया, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आया, देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी थियोरेटिकल. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रैंक एंड साइकिल. तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जस्ट नॉट द क्वेश्चन सर, इन एंड अराउंड का पूरा आपको आइडिया दे दूंगा सर, सो दैट सब्जेक्ट रिवीजन विल आल्सो बी कंप्लीटेड. समझ गए ना सर? वेरी गुड. देखो, लेट अस टेक रैंक. सी, वी विल कंप्लीट, मतलब कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे ऑल सब्जेक्ट्स का. ओके, राइट. देखो, isentropic expansion, this is occurring in turbine, this is occurring in condenser, this is occurring in pump, and this is occurring in boiler. You tell me, what are the processes in, आप बताइए sir, what are the processes in Rankine cycle? This is constant pressure heat addition, constant pressure heat rejection, isentropic expansion, isentropic process which is pumping. So isobaric, yes, it is present. Isentropic है, ध्यान से सुनो. And you tell me what is 2 to 3 process. Whenever the phase change is occurring, not only it is a constant pressure process, it is also constant temperature. It is not only isobaric, it is also isothermal. दोनों सही है. And isochoric. Which of the following is not involved? This is involved, this is involved, this is involved, this is not involved. So therefore the correct answer is option D. Sajjano, the correct answer is option D. Okay sir, okay sir, very good. Now we'll move to the next question. देखो, अंडरस्टैंड सर, द एफिशिएंसी ऑफ, आराम से, टेंशन नहीं लेने का मित्रों, टेंशन नहीं लेने का मित्रों. हाँ, ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट. ओ माय गॉड, भर भर क्या है बच्चे. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल I bow my head and thank you to all my students for respecting the quality. मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कूपन कोड नहीं दे रहा हूं, मैं कोई कुछ सेल्स नहीं कर रहा हूं, मैं कॉल करके आपको कॉल करके आ जाओ ले रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं. फिर भी आप क्लासेस को आ रहे. It clearly shows that you are respecting the quality and you people have increased my responsibility. And अभी 1 बजे तक रात में पढ़ रहा था, अब 2 बजे पढ़ के सुबह 7 बजे क्लास ले लूंगा. ये मेरा आश्वासन है सर. थैंक यू, दिस इज माय मोटिवेशन. चलो, वाह. देखिए सर जी, efficiency of Rankine cycle is lower than the efficiency of Carnot cycle. बताइए सर, बताइए सर, why the efficiency of Rankine cycle is lower than. ध्यान से सुनो. Please observe that in Carnot cycle we use compressor, in Rankine cycle we use pump. So the net work of Rankine cycle is more. Despite the more net work of Rankine cycle, the efficiency of Carnot cycle is more. Even though the net work of Rankine is more. What is the reason for that? मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान से सुनो सर, मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, एक बार देखो सर, मेरे लविंग स्टूडेंट्स इधर देखना, मेरे प्यारे बच्चों इधर देखना, देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। इधर देखो, इफ यू टेक कार्नोट साइकिल, अगर हम कार्नोट साइकिल ले लेंगे तो ये है सर कार्नोट साइकिल, ठीक है सर। इफ यू अंडरस्टैंड केयरफुली, all the heat is added at a single fixed temperature, all the heat is rejected at a single fixed temperature, so the efficiency of current cycle is 1 minus T lower by T higher. Very good sir. Now let us superimpose Rankine cycle on this. If I superimpose Rankine cycle on this, देखो sir, this is the Rankine cycle. Let me tell you very clearly, मेरे प्यारे दोस्तों एक बार देखना, let me tell you very clearly, 1 2 3 4 is 1 2 3 4 is Carnot cycle. हाँ सर, देखो सर, someone asked me HPCL is conducting same examination BTech and diploma on the same day. To be honest, I don't know. They want to like separate, क्योंकि some engineering candidates are also appearing for BTech diploma post, शायद उसको avoid करने के लिए कर रहा होगा. I don't know sir, to be honest. Okay, right. This is 3 dash and this is 4 dash. देखो 1 2 3 dash 4 dash is a Rankine cycle. देखो सर, in Rankine cycle, if you observe clearly, all the heat is not added at the same temperature. देखो देखो, this is the heat supply at low temperature, then it is supplied at this. तो अगर आप देखेंगे, the temperature of rejection is same, it is a condenser temperature, the temperature is rejected, the heat is rejected at the same constant temperature. There is no problem with mean temperature of heat rejection, that is same for Carnot and Rankine, but the only difference is the heat supply is taking place from lower to the higher. So mean temperature is something like this. As the mean temperature of heat addition is less, that's why the efficiency of Rankine cycle is lower than that of the Carnot cycle. So why the efficiency of Rankine cycle is low, sir? The mean temperature of heat addition is lower in Rankine cycle compared to Carnot cycle. और एक बात है, सेम वे में और एक क्वेश्चन आ सकता, which cycle has the highest work ratio? It is the Rankine cycle. It is almost equal to 1 sir. Work ratio is net work done by positive work. देखो, this is the work ratio. The work ratio is highest. The work ratio in Rankine cycle is highest because we use pump. Pump में liquid use होता है. The specific volume of liquid is very small. The pumping work is almost negligible. That's why the negative work is negligible. So net work is almost equal to the positive work. So the work ratio is almost unity, almost equal to 1. ये भी याद रखना सर. Is it okay? याद रहेगा? Yes. Go to the next question. हाँ बोलो सर, बोलो बोलो. द फिगर इज गिवन इन द नेक्स्ट फिगर. हाँ जी सर, मैं फिगर यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं, आप आंसर दीजिए सर. मित्रगणों फटाफट फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो. डग्गा डग्गा डा 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 डा. दिस इज द लोअर टेम्परेचर एंड दिस इज द हाइयर टेम्परेचर. TH आंसर दीजिए सर. क्वेश्चन देखो, T1 T2, ये T2 है, ये दिस इज इक्वल टू T1 एंड दिस इज इक्वल टू T2. नाउ बताइए सर. सो ही इज आस्किंग रेफ्रिजरेटिंग बोला है, व्हाट इज द COP? COP का डेफिनेशन होता है, द जनरल डेफिनेशन इज डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट. प्लीज वर्क इनपुट मत बोलना सर. The energy input may be in the form of heat, may be in the form of work, or may be in the form of both. If you see vapor absorption refrigeration system, the energy input is low grade energy heat आता है, लेकिन यहाँ पे work आता है. तो आप बताओ, what is the purpose of a refrigerator? The purpose of a refrigerator is to maintain lower temperature. To maintain lower temperature, I have to remove this heat, is heat core. So therefore, the COP of refrigerator is desired effect is Q2 by energy input, that is W. So therefore this is the equation. Here refrigerator बोला, Q2 by W is the right answer. और एक बात है सर, अगर same in the same question if you ask the COP of heat pump, it will be Q1 by W because in heat pump higher temperature is the concentration. ठीक है सर. Now go to the next. ये करो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम सर. Let's not waste time. If T1 is the inlet temperature, देखो
ये कौन सा साइकिल है सर? इट्स अ गैस टर्बाइन साइकिल. Do you know that the gas turbine cycle comprises of four processes, two isentropic, that is reversible adiabatic, and two constant pressure. Isentropic समझ में आ रहा है सर? Compression, constant pressure heat addition, isentropic expansion, constant pressure heat rejection. Okay, these are the four processes. Now देखिए सर, मेरे प्यारे दोस्तों आराम से देखो. He is asking the optimum pressure ratio. Can you tell the meaning of optimum pressure ratio? It is such a pressure ratio where the net work output is maximum. मेरे शब्द को every word you should focus, sir, because we don't know in the examination, as it is mostly theoretical, what is optimum pressure ratio. It is the pressure ratio corresponding to the maximum work output, net work output. So देखो सर मेरे प्यारे दोस्तों, the maximum pressure ratio in the Brayton cycle is given by the maximum temperature by minimum temperature to the power gamma by gamma minus 1. This is the maximum pressure ratio, sir. He is not asking maximum, he is asking optimum pressure ratio. He is asking pressure ratio corresponding to the maximum network. So if you go to our regular classes, the optimum pressure ratio can be written as maximum pressure ratio power 1 by 2. Root of maximum pressure ratio is optimum. So therefore इसका root लीजिए सर. अगर आप इसका root ले लेंगे, you get the optimum. So therefore it will be RP max is T maximum by T minimum power, ये gamma by gamma minus 1, इसका 1 by 2, तो ये हो जाएगा 2. But what is the maximum temperature, sir? T3. What is the minimum temperature, sir? T1. So the optimum pressure ratio is given by T maximum by T minimum power gamma by twice of gamma minus 1. Is this clear, sir? अब ये सवाल पूछ रहा है HPCL का थ्योरी बेस्ड या फार्मूला बेस्ड आता है. तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास, बिकॉज आई एम नॉट सेटिंग द पेपर, I have no information. This is the guess. So if when I saw the previous 3-4 years of paper, some numericals were also involved in HPCL, but इस बार कुछ अलग conduct कर रहा है. So I am also, देखो इस in this session you'll be seeing some numericals also, but numericals कम दे रहा हूं सर मैं. समझ में आ रहा है? ठीक है. So answer is D for Delhi. Is it correct, sir? क्या ये सही है सबको? सब लोग बोलो ये सही है. नेक्स्ट, कम ऑन सब लोग पार्टिसिपेट करो, सब लोग पार्टिसिपेट करो सर प्लीज. एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द गेम, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन द गेम सर. सब लोग पार्टिसिपेट करो. चलो चलो एवरीवन, वही तो बोल रहा हूं. देखो प्लीज रीड द क्वेश्चन. Which of the following is an isolated system? What is an isolated system? A system in which there is no energy interaction. The energy interaction can be heat or work or both, but there is no energy interaction. There is no matter transferring, मतलब no mass interaction. तो आप बोलो a system which does not permit the passage of energy and matter across it. So option C is correct, sir. Let us not waste our time. C is the right answer. Okay, चलिए. Now ये करो. The figure is given wrong. The figure is given wrong. मैं बताता हूं कैसे फिगर होना चाहिए भाइयों बहनों और दोस्तों. भाइयों बहनों और दोस्तों, read the question, sir. देखो थैंक यू बेटा, थैंक यू. नहीं इस बार मैं पूरा चेंज कर दिया. एक बार कास्टिंग देख लेना, एक एक देखो. थर्मोसॉम का तो पीपल हैव रेटेड DFEG. आई विल नॉट मेक एनी एडवर्टाइजमेंट सर, मुझे कोई जरूरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई जरूरी नहीं है. DFEG, DFEG.
मेरे पास कुछ बच्चे भी आए थे, सर कंसेशन दो, वो दो। आई सेड क्वालिटी दूंगा, आपकी मर्जी। बोल दिया सर, आप इसको कुछ भी समझो, आई डोंट माइंड, कि क्वालिटी तो दे दूंगा सर मैं। देखो, दिस इज द क्वेश्चन सर, व्हेन द सिस्टम इज टेकन फ्रॉम, मेरे प्यारे दोस्तों, व्हेन द सिस्टम इज टेकन फ्रॉम डी टू ई, डी से लेकर ई तक, along the path DFE, 100 kilojoule of heat. So heat transfer along DFE, 100 kilojoule of heat flows into the system, means heat is added to the system, it is plus 100. देखो, now we'll see next one, मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखो सर। now what is the flows along this, and how much system, how much the work is done by the system? The work done is given by, work done in DFE is 40 kilojoule. एक बार देखना सर, work done by the system as per our convention is positive, heat supplied to the system is positive, ये हो गया सर। ये कौन है भाई? ये साइकिल नहीं है सर, ये पता नहीं यार, आप क्या देखो, एक ऐसा है, एक ऐसा है, प्लीज नोट, डिड आई से दैट इट इज अ साइकिल? वन प्रोसेस, देखो, एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऐसा हो रहा है, डी एफ ई ऐसा हो रहा है, दूसरा हो रहा है ऐसा, डी जी ई। आपको कोई दिक्कत है सर? ललित, आपको कोई दिक्कत है सर? नहीं, ये देखो, क्वेश्चन को समझो, ही नेवर सेड साइकिल। सो एक देखो क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सर, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, इस डायरेक्शन में जा रहा है सर डीएफई, अलोंग डीएफई, ध्यान से सुनिएगा मेरे परम पूजनीय विद्यार्थी, क्या बोला मैं? परम पूजनीय विद्यार्थी। ओके, देखो, कैन आई कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज? देखो, d dash q is equal to du plus d dash w. Let me apply this for DFE. Heat transfer in DFE is equal to internal energy. देखो देखो, the internal energy, we are, the process is taking place from D to E. What does change mean? Change is always final minus initial. So we are moving from DFE. D is initial, E is final. तो final internal energy minus initial internal energy. ये देखो, सही है सर, सही है, प्लस वर्क इन DFE. दिस इज द फर्स्ट लॉ इक्वेशन। ओके, व्हाट इज द हीट ट्रांसफर सर? 100 is equal to UE minus UD, and the work is 40. So what is the internal energy change sir? UE minus UD is equal to 60. I think the internal energy change is 60 na? Very good sir. Now he is asking, ध्यान से सुनिएगा, he is asking how much how much heat will flow from D to E along DGE. DGE apply करो sir. Now you apply sir, apply करो. Heat transfer in DGE is equal to internal energy change plus work transfer in DGE. So what is the ध्यान से सुनो, he is asking heat transfer DGE का exactly. Can anyone tell D से लेकर हम E तक जा रहे हैं, तो what is the internal energy change sir? Final minus initial. ध्यान से सुनिएगा, heat and work are path functions, therefore heat and work values will be different when the path is changing, but the internal energy is a property, it depends only on endpoints, whether you move along DFE or DGE, the endpoints are same. So whatever the internal energy change you have calculated for DFE, same will be the internal energy change for DGE, because it is a point function. So it is UE, देखो, DGE, UE minus UD plus D dash DGE. So what is the heat transfer? He is asking heat transfer in DGE. So UE minus UD, what is UE minus UD? 60 plus work already given. How much is the work given sir? 15. Done by it, मतलब done by means the system is doing 15. So therefore ये कितना आ रहा है सर? ये anyone, what is the value sir? It is equal to 75. Hope this is clear sir. Is it clear sir? Yes, 75 is the right answer. Okay, बोलिए, बोलो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट, हाँ, थोड़ा फास्ट करो सर। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट।
Make it fast. Make it fast. Very good, very good, very good. Please read the question properly. I request everyone to read the question properly. Read the question properly. Come on, come on, come on. Otto cycle. Otto cycle consists of two constant volume and two isentropic. Two isentropic, two constant volume. On PV diagram, this is the representation. देखो, heat addition at constant volume, heat rejection at no, heat rejection no, both heat addition and heat rejection at constant volume. So can I say A is matching to 3? Can I say A is matching to 3? Yes. Diesel cycle. For diesel cycle, the only thing is supply, sir. The supply is occurring at heat addition at heat addition is constant pressure, heat rejection. So fourth one is diesel cycle, sir. C, Brayton cycle. देखो Brayton cycle. What is Brayton cycle, sir? Two heat is added at constant pressure, heat is rejected at constant pressure. Heat addition, both addition and rejection at constant pressure. So C is matching to 1 and D, Atkinson cycle. In Atkinson cycle, the heat added is at constant volume and heat rejection is at constant pressure. देखो, heat addition is at constant volume. कहाँ गए रे? And it is constant pressure 2. So 3, 4, 1, 2. Anyone got this answer, sir? 3, 4, 1, 2. Excellent, sir. Excellent. So options है 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. I think option A is correct, na? No one is saying. चलो सर, मैं जा रहा हूं सर. मैं जा रहा हूं सर, बंद कर रहा हूं सर, दुकान बंद कर रहा हूं सर. सर दुकान बंद कर रहा हूं सर. Next. देखिए, there is a possibility of questions also. देखो, 1 kg of air and R is 287 joule per kg per Kelvin undergoes irreversible process between the initial temperature is first convert in Kelvin. 35 is 273 plus 35 is 308 Kelvin and the initial volume is 1.6 and the final temperature is 273 plus 35, it is 308 Kelvin and the final volume is 0.8. What is the change in entropy? You know very well, air can be treated as an ideal gas. For ideal gas, please close the shop right now. Very good. हाँ बिल्कुल क्लोज कर देंगे सर, बिल्कुल क्लोज करेंगे, क्योंकि तेरा दुकान और कहीं चाहिए तो ले ले. मैं क्लोज नहीं करने वाला हूं सर, मैं क्लोज नहीं करने वाला हूं सर. अब हाँ, मैं क्लोज नहीं करने वाला हूं, मैं बहुत खतरनाक हूं. सो देयरफॉर there are 3 equations of entropy, sir. CVln T2 by T1 plus Rln V2 by V1. S2 minus S1 is equal to Cpln T2 by T1 minus Rln P2 by P1. S2 minus S1 is equal to Cpln V2 by V1 plus Cvln P2 by P1. So anyone remembers all the 3 equations? Anyone remembers all the 3 equations? But all the 3 are valid strictly for ideal gas only. याद रख लेना, क्या पता कल सेम फॉर्मूला बेस्ड आएगा, सेम फॉर्मूला आ सकता है सर. नाउ वन स्टूडेंट आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, सर देखो, जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था, एक स्टूडेंट ने मुझे ख्वाब में पूछा, सर यहाँ पे लॉगरिथम इज इन्वॉल्व, क्या एग्जाम में लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं? क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाता है? क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर साझा किया जा सकता है एग्जाम में? क्या साझा करे? अब देखते हैं सर. देखो, डोंट वरी, विच इक्वेशन आर यू गोइंग टू यूज? सर ध्यान से सुनो. हियर टेम्परेचर्स एंड वॉल्यूम्स आर गिवन. सो व्हाट आई डू इज I will use that equation where temperature and volumes are given. So therefore, मैं इसको काढून टाका. I am removing this. So therefore, the entropy change is given by, देखो, S2 minus S1. And one more thing, sir, इधर देखो. देखो, एक सेकंड.
what is T1 and T2 sir? देखो T1 and T2 are same. When T1 is equal to T2, T2 by T1 is equal to 1. Log T2 by T1 is equal to log 1. Log 1 is 0, तो ये 0 हो जाएगा. It is R ln V2 by V1. Absolutely. तो S2 minus S1. What is the value of R sir? देखो एक बार. R is 287 ln V2 by V1. V2 is 0.8. V1 is correct na? V1 is 1.6. How much is this sir? S2 minus S1 is equal to 287 ln देखो 1 by 2. तो can I write this as minus 287 ln 2 because 1 by 2 is 2 power minus 1. Minus 1 इधर आएगा. अब लॉगरिथम 2 भी नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर. इवन इफ यू डू नॉट नो लॉगरिथम ऑफ 2 आई विल नॉट डू एनीथिंग. इट इज 287 इंटू 0.693. तो कितना आएगा सर ये आंसर? कितना आएगा सर ये आंसर? कितना आएगा सर? इवन विदाउट कैलकुलेटर यू नीड दिस. देखो माइनस आएगा सर. हाउ मच इज द आंसर सर? बोलो. आई विल नॉट यूज कैलकुलेटर. आप आंसर दीजिए सर. आई एम वेटिंग फॉर यू. 199 point something is the right answer. Do you need calculator? जरूरी नहीं सर. नेक्स्ट. नेक्स्ट. इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है बोलो सर. एक सेकेंड. कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में. व्हाट इज द गड़बड़ यू आर? फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन सर. बोलो बोलो फटाफट. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम सर. कम ऑन कम ऑन. There is some problem with this question. एक second. Yes, that is over, sir. Come on. Let's not waste time, sir. Read the question. Sir, इतने बड़े questions आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, sir. इसमें there is nothing in this question. Come on, dear. Come on, dear. Read the question. थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, sir. नहीं, मैं अभी आपको I will give you figure. I will give you figure. Now you have to identify what is the problem in the figure. देखो, मैं आपको फिगर दूंगा. What is the problem in the figure? बोलो सर. बोल सकते हैं आप? What is the problem? गेस मारो सर. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर फिगर में. बोलो. बोल नहीं सक रहे आप? देखो, he has shown this temperature as 150 and he has shown this as 250. How can the temperature be decreasing मतलब high to low? ये ऐसा नहीं है सर. It should be at high temperature, it should be at low temperature. Yes, very good. It should be at high temperature, it should be at low temperature. नहीं आ रहा सर समझ में. See, actually the figure is भाइयों बहनों और मित्रों. भाइयों बहनों और मित्रों. Now you do the question, sir. Now you do the question, sir. देखो, a composite wall is made of two layers of slab 2B and B, and the thermal conductivities are K1 and K2. So he is asking the relationship between K1 and K2. Anyone, and you know very well, as it is a steady state, whatever heat is entering, the same heat should flow. So steady state, if nothing is given, we take it as steady. So Q is equal to Ka delta T by L. Absolutely perfect. And you know very well what is Q by A, sir. Q by A can be written as K delta T by L. Wonderful, sir. और एक बात है, इधर देखो सर, मेरे प्यारे सज्जनों, इधर देखो. इधर देखिए मित्रगणों. देखो, what is the heat transfer and area? If you see the third dimension, the area for this as well as this is same. Area is same. So Q by T is same. So in both the cases, the heat transfer is same because it is a steady state. Area same. This is constant. So can I write K delta T by L
for first case, let us take this as first case and let us take this as second case. Sir, with concept कीजिए, I mean without mathematics, with concept, thermal resistance. हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, so is equal to K delta T by L for 2. Excellent, sir. Wonderful. Wonderful, sir. देखो, with concept कीजिए, ये बोल रहा है Q delta T is equal to Q into R. देखो देखो, वो बोल रहा है ऐसा करो सर. क्या है वो तो ये तो वही किया ना मैं. In both the cases the temperature drop is same. 400 से 250 is 150. करेक्ट ना? Is it 150? And 250 to 100 is 150. दोनों में temperature drop same है. And Q is also same. When temperature drop and Q is same, तो resistance तो same होना है. L by KA. L by K है ना सर, वही तो है, हम तो वही कर रहे हैं. अरे यार, that is what we are doing. ठीक है सर. What is K? K1. And दोनों में टेम्परेचर ड्रॉप सेम है. What is L1? The thickness, it is 2B. What is this? K2. And what is the thickness of this B? तो B कट गया, तो K1 is equal to twice of K2. K1 is twice of K2. I think D is the right answer ना? Very good sir. D is the right answer. Take this question. हाँ, पोल करेंगे. पोल करावे. हीट कंडक्शन के लिए विच लॉ आर यू यूजिंग? फॉर कंडक्शन फोरियर्स लॉ. For convection, Newton's law of cooling. For radiation, Stefan-Boltzmann law. So for conduction, it is Fourier's law. Option B is correct. Okay. Were they invented? Do you? वही तो दे रहा ना. At my institute, that is sorry. At our institute, that is KAME. What does KAME stand for? Kulkarnisir Academy of Mechanical Engineering. Subject wise is available. एक बार कभी हमारे हवेली पे आके देख लेना सर. विल यू गिव? दुनिया पूरा पता है कि सब्जेक्ट वाइज इज ऑल्सो अवेलेबल. ये आके पूछ रहा है सर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा. आके एक यू जस्ट चेक वन सब्जेक्ट, देन यू विल कम टू नो. Even the thermal conductivity is different. देखो इसमें स्लोप इट इज अ स्ट्रेट लाइन ना, इसमें स्ट्रेट लाइन, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग है. कि फिर क्या स्लोप सेम होना चाहिए ललित? इसमें स्लोप कांस्टेंट है, लीनियर. समझ गया? मटेरियल. नाउ नेक्स्ट, ये आंसर दीजिए सर. सी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि हमारे एरिया में एडवर्टाइजमेंट्स कमी होते हैं सर. वी डोंट, कमी नहीं, जीरो. My marketing amount is zero rupees. I don't spend in marketing because I am in noble profession. Chalo. What is logarithmic mean temperature difference, sir? You know very well. देखो एक बार. Let us take parallel flow heat exchanger. Let this be the hot temperature inlet. Let this be the hot temperature exit. The cold fluid is entering at 1 and the cold fluid is leaving at 2. Is it correct, sir? Hot fluid temperature is decreasing, the cold fluid is increasing. And this I call it as delta T1. Can you tell me what is delta T1, sir? It will be TH1 minus TC1. And this I call it as delta T2. What is this, sir? TH2 minus TC2. And we have derived very clearly the logarithmic mean temperature difference is equal to delta T1 minus delta T2 by log of delta T1 by delta T2. This is the equation where delta T1 is this value, delta T2 is this value. This is for parallel flow heat exchanger. Now, if you go to counter flow heat exchanger, then also we have the same equation. But the only difference is, एक बार देख लीजिए. If you see the counter flow heat exchanger, the hot fluid is entering at 1, hot fluid is leaving at 2. The cold fluid is entering at 1, the cold fluid is leaving at 2. Now what is delta T1? This is delta T1, sir. ये वाला delta T1, it is TH1 minus TC2. हाँ, this is TH1 minus TC2 and delta T2 will be equal to, this is delta T2, TH2 minus TC1. Whether it is a, ये अभी complete नहीं हुआ sir. It's not yet completed. Okay. So we'll be starting. Okay. This is the equation of delta T. So what is the answer, sir?
Is B correct, sir? Yes, absolutely B is correct. Absolutely B is correct. Okay. चलो next. हाँ ये क्वेश्चन पढ़ो सर. ये क्वेश्चन पढ़ो. Which of the following is not? Which of the following is not? देखो. Some unsteady state problems may require simplifying assumptions such as lump. बिल्कुल सही है सर. This is correct because unsteady state is not easy, sir, because we have to make some oversimplified assumptions. Heat transfer rate, temperature, and other parameters change with time. Yes, in unsteady, this is also correct. Unsteady state heat problems are generally more complex. ये भी सही है sir. Large number of analytical solutions are available. No, this is wrong. So he is asking which one is not correct. This is not correct. Large number of analytical solutions are available for. Nahi sir. No. So therefore, the answer to this is, he said which one is not correct. This is not correct. All these statements are correct statement, and this is wrong statement. Okay. ये पढ़ो. आंसर दीजिए सर. कैन यू सी सर? दिख रहा है आपको? कम ऑन कम ऑन. कम ऑन कम ऑन. दिख रहा है सर आपको? यस. Heat transfer at higher temperature is dominated by radiation than convection. बिल्कुल सही है सर. Radiative heat transfer will dominate at higher temperature. मतलब what is the reason for that? एक बार देखो सर. Heat transfer is proportional to T power 4 as per Stephen Boltzmann law. तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, what will be T power 4? T power 4 will be much more higher. बहुत बड़ा होता है. So therefore वो dominant होता है. But where देखो, whereas for convection it is just linear delta t. But for that power 4, therefore it is dominating, sir. Heat transfer at high temperature is dominated by radiation. Then this is absolutely correct. What is the reason for that? Because the temperature is proportional to fourth power of temperature. Heat transfer by convection is given by this, whereas radiation is this. Matlab, this is not only correct, but it is supporting also. Therefore, both are correct and it is the correct explanation. A is the right answer. Must question tha, sir. Is it okay? Wonderful, sirs. Next. थोड़ा जल्दी करो सर. Let's not waste time. थोड़ा जल्दी करो सर. Please do it fast. Let's not waste time. Please do it fast. Conduction. Conduction के लिए heat transfer takes place by direct contact. Yes. So A is matching to 2. Convection takes place within the fluid. Okay. B3. A2 B3. And radiation through electromagnetic waves. Yes, I think option C is correct. ना इसके लिए कोई explanation नहीं चाहिए ना? No need of any explanation ना sir? You don't need any explanation. Shall I proceed, sir? No need of any explanation ना? Yes. चलो ये करो. ओ हो. ऐसा क्यों ब्रेक हुआ रे डिफरेंट पेजेस में? Why it broke in different pages? अरे यार ये दिक्कत हो रहा है सर. This question is broken into pieces, but that's not correct. देखिए चलो कोई बात नहीं सर. एटलीस्ट ये देखो. एटलीस्ट यू सी दिस. आई थिंक ये मुझे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लग रहा है सर. फर्स्ट वन. करेक्ट और नॉट सर? सो यू नो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या है सर? लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, लैम्डा वैल्यू एट विच द मैक्सिमम एमिसिव पावर टेक्स प्लेस विल डिक्रीज. कुछ ऐसा याद है आपको?
कुछ ऐसा याद है सर? देखो, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, पीक वैल्यू, तो लैम्डा टी, दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट. According to Planck's law, the radiation emitted is in the pocket of quanta of energy. This is Planck's law, sir. This is Planck's law. It states that the radiative, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं आ रहा सर. Oh my God, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? हाँ, Planck's law. It is matching to 2. It is matching to, C is matching to 2. And स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का है रे, एक सेकंड, ये कौन सा है रे? व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ 1. यस, D is matching to 1, C2D1, 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 गया गया गया. तो आंसर इज 3 4 2 1. एक सेकंड, एक बार देखना. A3, किरचॉफ्स लॉ. कैन यू टेल व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? एक बार देखो. कैन यू सी व्हाट इज? At a given temperature, the emissive power to the absorptivity is constant. Under thermal equilibrium, the ratio of emissive power to the absorptivity is constant. It is Kirchhoff's law. So A is matching to 3. Let's see what is B. B, Stefan Boltzmann law. देखो, the total radiation is proportional to 4th power of absolute temperature. It means it is 4. बाकी का C, 2 and D1. So therefore 3 4 2 1, 3 4 2 1. I think A is the right answer. Is it okay, sirs? Is it okay? Right. Next. थोड़ा जल्दी करो सर. Let's not waste time. थोड़ा जल्दी करो. We have to do so many questions. We have to do so many questions. Fins are used to increase the heat transfer. How fins are used for increasing heat transfer? By attaching external surfaces. That is, by increasing the surface area. When the surface area is increased, the heat transfer will increase. Increasing the surface area. So 2 is right. Only 2. Increasing the, no. Increasing the convection, no. No, no. The purpose of fins is to increase the heat transfer by increasing the surface area. No other parameters are touched. Is it clear, sir? So therefore only 2 is correct. Is it okay? Bolo, sir. The purpose of fin is not to increase the temperature difference. Fins में क्या कर रहे sir? You are not touching the base temperature or ambient temperature. Ambient temperature is fixed. The base temperature, देखो, the base temperature is fixed. The ambient temperature is fixed. You cannot change this. Just by increasing the area, the heat transfer surface area, when it increases, the faster the heat transfer is. So be careful, sir. Be careful. The purpose of fins are to, or the purpose of fins is to increase the heat transfer by increasing the surface area. ये करो, जल्दी जल्दी करो सर. Which of the following is incorrect? सोच के बताना सर, सोच के बताना. I am giving you time. Incorrect बोला है सर. A refrigerant should have high latent heat. This is correct, sir. If the latent heat is high, the heat absorbing capacity मतलब ज्यादा लेगा, mass flow rate required will be less for a given heat transfer rate. So therefore yes, सही है sir. It should have positive evaporative pressure. ये भी सही है sir. This is also correct. This is also correct. This is correct. Q, because it should have large latent heat, so that when the latent heat is large, your refrigeration effect will be more. Next, or for a given capacity, the mass flow rate required will be less. Yes, sir. Yes, sir. Refrigerant should have positive evaporative. Yes, sir. Why, sir? If the evaporator pressure is low, positive means above atmospheric or near atmospheric. If the evaporator pressure is low, when the pressure is low, the atmospheric air leaks into the system due to low pressures. अगर evaporator pressure बहुत ही कम होता है, तो surrounding air will leak into the system, and thereby it is not good, healthy sign for the refrigeration system. So this is also correct. A refrigeration should be cheap. ये भी सही है sir. It should be cheap. Refrigerant should have low thermal conductivity. क्या ये सही है sir? Actually the purpose of the refrigerant is to transfer heat faster. If the thermal conductivity is higher, it transfers faster. तो मेरा पर्पस है हीट ट्रांसफर है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में. इट शुड टेक फ्रॉम लोअर, थ्रो इट टू हायर. सो इफ द कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड इज मोर, इट विल ट्रांसफर फास्टर. So therefore it should have low thermal conductivity. It is incorrect, sir. Therefore D is the right answer. Next.
Come on, come on. A refrigerant usually used for aeroplanes. Air is used. It is aircraft refrigeration systems use reversed Brayton cycle, Bell-Coleman or gas refrigeration cycle. Why air is used? Because in aeroplanes weight is the important constraint. So weight of the refrigeration system, देखो weight per ton of the refrigeration is low. That's why we use this. So why air is used? Because of its low weight per ton of refrigeration. So therefore D is the right answer. ये करो जल्दी 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 सर. Which one is again incorrect? Sir, एक second. Whenever theoretical questions are coming, your focus should be on not correct, incorrect, correct. ये बहुत जरूरी है sir. And you should be very, very careful. COP refers to the ratio of desired effect to the energy input. This is correct. So easy asking correct statement, no incorrect. COP of most refrigerators and heat pump is less than 1. Is the option B correct or incorrect? I am waiting for you, sir. Is option B correct or incorrect, sir? मैं पूछ रहा हूं क्या ऑप्शन बी सही है या गलत है सर? Is option B correct or wrong? According to me, it is wrong because COP of heat pump is COP of refrigerator plus 1. So heat pump का COP 1 से कम नहीं होता है सर. 1 plus something. Refrigerator can have a COP lower than 1. Can you give an example where the refrigerator has lower COP which is less than 1? Gas refrigeration system, vapor absorption system, उसमें COP 1 से कम होता है सर. And refrigerator can have COP 1, refrigerator can have COP more than 1. ठीक है सर. For example, air conditioner, it is more than 1, around 3. Domestic refrigerator, it's around 1. So this value may be anything, but 1 plus something. Heat pump COP cannot be less than 1. So COP of most refrigerators and heat pump is less than 1. Galat sir, it is incorrect. He is asking you to select incorrect statement only. He is asking you to select incorrect statement only. Okay? Now. हाँ साहब मैं क्लास में हूँ साहब. मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक. Right. Now. ये करो. Please read this statement. Come on, come on. Come on, Sarji. Come on, read this statement. आप लोग सब तैयार है सर? क्या आपकी क्या है कि जान ले जा रही है एडवर्टाइजमेंट वाले. कम ऑन कम ऑन कम ऑन सर जी. ललिता बाबू, बाबू ललिता, आप. Two pumps have discharge Q and head H are connected in series. Both pumps are identical in all respects. देखो, why are pumps connected in series? Not to alter the discharge, to increase the head. Why are pumps connected in parallel? To increase the discharge. Pumps are connected in parallel to increase discharge. Pumps are connected in series to increase the head. अब आंसर बोलो. Two pumps are connected in series. When they are connected in series, discharge will be same, but the head will increase. दोनों पंप, एक पंप का हेड H है, दूसरे का H है, दोनों सीरीज में कनेक्ट किए तो डिस्चार्ज क्या होगा? Q ही रहेगा एज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. देखो सीरीज का मतलब ऐसा रे, तो अगर वॉट एवर द डिस्चार्ज इज एंटरिंग सेम, नहीं आ रहा समझ में, लेकिन हेड क्या होगा? डबल होगा. समझ गए? सो देखो व्हाट इज द आंसर. टू पंप्स having discharge Q and head are connected in series. Both pumps are identical.
न्यू डिस्चार्ज इज क्यू बट द हेड इज सेम एज, गलत है सर, ये गलत है। न्यू डिस्चार्ज इज क्यू, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो अरे यार न्यू, अरे ये क्या करें, न्यू डिस्चार्ज, कुछ प्रॉब्लम हुआ सर प्रिंटिंग में। न्यू हेड इज सेम एज एच, गलत है। देखो देखो एक सेकंड, when pumps are connected in series, what will be the new discharge? When pumps are connected in series, what will be the new discharge? Anyone in the class? अरे Q will be, new discharge is Q, ये correct है। New head is H, no। Can you tell me what will be the new head? क्या कोई बता सकते what will be the new head? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। What will be the new head? Discharge same है बाबा, what will be the new head? New head, न्यू हेड पूछा सर मैं। फर्स्ट वाले का एच है, दो पंप्स है, उसका हेड एच है। वेरी गुड, ललित इज करेक्ट, देयरफॉर इट विल बी 2H। न्यू हेड इज एच, गलत है सर। ओनली बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट, गलत। नन ऑफ द कंक्लूजन गलत, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, गलत। ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? क्या स्टूडेंट्स है सर, आप भी बेकार है सर, मेरे से भी बेकार है। मैं तो बेकार हूं, लेकिन आप मेरे से बेकार मत रहो सर, मैं बुढ़ा हो गया। वाह, क्लियर। फटाफट 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 देखो, प्रोपेलर शाफ्ट में इट इज एन एक्शन फ्लो टर्बाइन विथ फिक्स्ड वेन्स। कैप्लान टर्बाइन इज ऑल्सो एक्शन फ्लो टर्बाइन बट adjustable vanes. So whenever the blades are adjustable, the part load efficiency will be the best one. तो कैप्लान टर्बाइन का part load efficiency सबसे highest होता है क्योंकि runner blades are adjustable. Okay, so propeller shaft, तो ये होगा सर। फ्रांसिस is a reaction turbine, inward flow reaction turbine. Kaplan is axial flow with adjustable vanes and Pelton wheel is a tangential flow impulse turbine. देखो एक ही क्वेश्चन में चार कवर हो गए सर, इन वन क्वेश्चन चार क्वेश्चंस कवर हो गए सर, एक ही क्वेश्चन में चार कवर हो गए। देखो A3, B1, C4 and D2, 3142, 31 is option B correct sir? Next, फटाफट फटाफट, come on come on, come on come on। बालगंगाधर गंगा गंगाधर, बालगंगाधर गंगा गंगाधर, आंसर दीजिए। रेनॉल्ड नंबर रो वी डी बाई म्यू, ए इज मैचिंग टू 4, उसमें कोई शक नहीं है। डुया डुया, मैक नंबर, द बल्क मॉड्यूलस, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल कम इन मैक नंबर। तो आंख बंद करके 3 को टिक करना, बी इज मैचिंग टू 3, खत्म, बाय बाय। वेबर नंबर सरफेस टेंशन विल कम, सो सी इज मैचिंग टू 2। यूलर नंबर प्रेशर विल कम, देखो वेबर नंबर सरफेस टेंशन आता है, कोई ये रेशियो मत देखना सर, वेबर नंबर सरफेस टेंशन, सिग्मा इज सरफेस टेंशन, सी इज 2 एंड यूलर नंबर प्रेशर फोर्स आता है, तो पी है इसमें, तो 1, खत्म सर, दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना सर। यूलर नंबर प्रेशर, वेबर नंबर सरफेस टेंशन, फ्राउड नंबर ग्रेविटी, मैक नंबर इलास्टिक फोर्स, रेनॉल्ड नंबर विस्कस, दैट्स इट। करो, मुझे कुछ नहीं आता सर, अब मैं क्या करूं? एटलीस्ट आई नो दैट वार्म gears are used for high speed reductions, high speed ratios. So therefore A is matching to 4. Wonderful sir, A is matching to 4. Next, मुझे ये दोनों पता नहीं, मैं पागल हूं ना इसलिए। स्पर gears, parallel shafts, D is 1।
A4 ये D1 गया 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 D1 खत्म सर, अभी कुछ बचा है सर, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। एंड क्रॉस हेलिकल नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, कहां गए रे, क्रॉस हेलिकल नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, करेक्ट, बेवल गियर्स इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग, सो देयरफॉर बिल्कुल सही है सर। समझ में आया सर? वाह कितना प्यारा सा क्वेश्चन। ओ बोलो एक बार ओ, जल्दी जल्दी सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लंच भी करना है। पढ़ पढ़ के पागल बनेंगे रे, नकल मार के नवाब बनेंगे रे। कम ऑन। चलिए, यू पीपल आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट सर, व्हाई शुड आई कम? देखो ये सवाल कुछ अच्छा है सर, प्लीज नो नीड ऑफ कैलकुलेटर सर। व्हेन द सिस्टम इज रोटेटिंग, ध्यान से सुनो, कंप्लीट सिस्टम इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो डोंट राइट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ऐसा कुछ मत लिखो सर। देखो, you don't know mass of, let us take this as 1, let us take this as 2, let the mass of this be m1, let the mass of this be m2। हाँ, जब ये घूमता है तो रोटेशन का ये, हाउ विल बी द, जब ये घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। m, व्हाट इज द रेडियस सर? 75 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर। सर आप यूनिट फॉरगेट यूनिट्स बाद में देखेंगे, सर सेंटीमीटर में बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में हम इक्वेट करेंगे ना, सो बोथ साइड्स डिवाइड करना पड़ता है। दिस द सेंटीमीटर, यहां का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर m, b1 m, b1 का मास है m, ओके, r व्हाट इज दिस लेंथ सर? दिस लेंथ इज गिवन एज 40 ओमेगा स्क्वायर, इसका फोर्स क्या है सर? रेडियल m, m m m2। अच्छा क्वेश्चन है सर, आपको शायद एग्जाम में ये आ सकता। एम आर, व्हाट इज द रेडियस सर? व्हाट इज द रेडियस? इट इज 60 ओमेगा स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल, फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम some of the outward, some of the inward forces should be same, so therefore 12 into 75 into omega square is equal to 40 m1 omega square। ये बाहर है, ये अंदर है, so sum of the downward is equal to sum of the upward, so therefore 60 m2 omega square, omega square। See, have you understood now why I have not changed from centimeter to meter? देखो, चेंज करना है तो इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, सो देयरफॉर इट डजंट मैटर, सो डिवाइड विथ 100, डिवाइड विथ 100, वंडरफुल सर। तो कुछ चेंज, कुछ कैंसिल कर सकते सर हम? कैन आई कैंसिल समथिंग सर? ये अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं आपको बताता हूं। कैन आई कैंसिल समथिंग सर? कुछ कैंसिल हो सकता है सर? कुछ कैंसिल हो सकता है सर? गलत है सर, ये 70, ये इसका रेडियस कितना दिया, एक सेकंड, इट इज एट 50 सेंटीमीटर, सॉरी, दिस इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर, आई एम गलत सर, ये 50 दे रखा है सर, सॉरी, इसका रेडियस 50 दिया सर, इज इट ओके? क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। देखो देखो, 12 kg mass is at 50 radius, 12 kg mass is at 50 radius, b1 is at 40, b2 is at 60। ठीक है सर, अब देखो सर, कुछ कैंसल हो सकता है सर, 0 0 0, तो 12 5 60 इज इक्वल टू 4m1 प्लस 6m2। ठीक है सर, नाउ आई थिंक 2 कैन बी रिमूव्ड, सो 230, 2 तो 2m1, 2 तो 3m2, this is my first equation। anyone, he is asking which mass sir? he is asking b1, हम b1 को क्या लिए सर? हम b1 को क्या लिए? m1। अब क्या करें सर? यू कैन टेक मोमेंट एनीवेयर, यहां पे तो लो या कहीं पे भी, यहां पे ले लेंगे, तो द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, ये तो पास हो रहा है 0, इसका मोमेंट क्या होगा सर? m1 into 40 into omega square, this force into this perpendicular distance is 50, this is anti-clockwise and this is clockwise, should be equal to clockwise, what is this? m2 into 60 omega square into 75। ये बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है सर, दोबारा बता रहा हूं,
this force into this perpendicular distance, ये वाला force, this force into perpendicular anti-clockwise should be equal to clockwise. This force is m2 60 omega square into 75. So this is gone. ये zero is gone. 2s 52s 53s, 2 2s 2 3s. 4m1 is 9m2. आपको m1 चाहिए सर. So 30 is equal to 2m1 plus 3m2. What is m2 sir? 4m1 by 9. 3 1s 3 3s. So 30 is equal to 2m1 plus 4m1 by 3. So 3 to 6 plus 4 is 10. So 30 is equal to 3 to 6 plus 4 is 10 m1 by 3. 0 0 गया. तो m1 is equal to 9 kg. A good question sir. Have you understood sir? Have you understood sir? Please tell me, is the question clear? प्लीज बताइए क्या ये सवाल समझ में आया सभी को? नहीं है सर आपको? Is this clear? 9 is the right answer. बोलो. Do this question. ये करो. Come on sir. Please read the question properly. पढ़ो सर. If you give answer to this question, I'll be the happiest person, sir. If anyone gives answer to this question, I'll be the happiest person, sir. मैं बहुत खुश हो जाऊंगा सर. इसका आंसर अगर कोई देंगे. I'll be so happy, sir. देखते हैं सर. आई एम वेटिंग सर. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वेटिंग, बिकॉज कुछ अच्छा आने वाला है आपसे. बी. हु सेड बी? कौशिक शर्मा. वाई सर? वाई बी? वेरी गुड. वाई बी? कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर. लेट अस अज्यूम दैट x is measured from here. देखो, when is the force zero sir? Force variable force है. Oscillate about the mean position. Oh my goodness. Very good. Integration. देखो देखो एक सेकंड. Common sense says you can integrate, or the common sense says, देखो, f into dx 0 to 16. अगर करेंगे तो ये कितना आ रहा है सर? बिकॉज फोर्स, देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट द फोर्स इज वेरिंग विथ डिस्प्लेसमेंट. सो टेक द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड इंटीग्रेट. इससे आएगा. लेकिन कॉमन सेंस एक बार बोलो सर. कॉमन सेंस, इफ यू डू दैट यू विल गेट जीरो. बट व्हाट इज द कॉमन सेंस? देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनो, 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक व्हाट इज हैपनिंग? When x is, देखो, 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक, what is happening to the force? Force is decreasing, 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 decreasing. And at x is equal to 8 into 3 is 24. Here the force is 0. Now you tell me,
When x is crossing 8, what is happening to F? Anyone in the class, when x is crossing 8, what is happening to the force? This is becoming negative. Negative means in the opposite direction. Earlier the force was like this, next the force is like this. Now you put x is equal to 16. तो क्या होगा सर? देखो, when x is equal to क्या बोलते हैं 16, it is -24. Means it is changing from +24 to -24, and finally it is coming where, sir? It is coming to the same point, पॉजिटिव फोर्स टू द नेगेटिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स टू द नेगेटिव फोर्स. समझ में आ रहा है सर? पॉजिटिव टू नेगेटिव, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? जीरो. अंडरस्टूड और नॉट सर? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? नहीं यार, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क. तो एक बार फोर्स देखो, फोर्स इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, जीरो. देन 0 to 8 मीटर तक, 0 to 8 मीटर तक फोर्स इज डिक्रीजिंग. अगेन 8 मीटर से 0 तक डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, अगेन ओरिजिनल फोर्स आ रहा है. सो अप टू दिस, तो क्या होगा सर? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 to 16, 0 to 8, 8 to this. When the direction of force is changing, the displacement is also changing. What will be the net displacement, sir? नहीं आ रहा सर आपको. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ रहा है सर? When you are integrating this, how much value are you getting, sir? Say something. जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, व्हाट इज द आंसर? जीरो आ रहा है ना? यस. फिजिकल एक्सप्लेनेशन तो दे रखा मैं. Yes. I've given the physical explanation, sir. 0R. What is the physical explanation? एक बार देखो. What is the physical explanation for this? एक बार physical explanation देखो. The object is pushed. The magnitude of force is decreasing. At this, the force is 0. Means it got displaced from 0 to 8 meter. This is the displacement. तो कुछ वर्क हुआ. Now, उल्टा. What is ulta? Why ulta? Because the force direction is changing, the displacement is opposite. तो फिर वहीं पे आ रहा है सर, 0 to 16 मीटर. So 0 to 8, 0 to 16. समझ में आया नहीं आया? So what is the net force? 0. Okay? समझ में आया? नेक्स्ट ये करो, देखते हैं सर. Say something dear. बोलो. अरे यार, आप लोग रेडी नहीं है सर. What am I supposed to do if you people are not ready? तो कब है सर एग्जाम? एक बार देखेंगे. आई थिंक आई कैन कंडक्ट इन नेक्स्ट सेशन ऑल्सो. अगेन देखो सर, व्हेन इज योर एग्जामिनेशन? व्हेन इज योर HPCL एग्जामिनेशन? व्हेन इज योर HPCL एग्जामिनेशन? अरे यार, कोई कमेंट्स ही नहीं आ रहे. 3rd May. तो shall I conduct day after tomorrow? बाकी के सारे क्वेश्चंस ओके? Shall I conduct day after tomorrow as you wish? डेली 1.5 hours, या फिर कल कुछ करे? आप बताओ सर. Say something dear. The examination is on 3rd. तो बाकी के क्वेश्चंस बाद में कर लें. ठीक है? यस, नो प्रॉब्लम ना. विल डू इट लेटर. चलो फिर आई विल एंड दिस सेशन. ओके, बाय बाय. थैंक यू. अच्छा लगा? टाइम तो वेस्ट नहीं किया सर. आई हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम. 1 hour 15 minutes. अच्छा, कल करेंगे फिर, कल कर लेंगे फिर. हाँ, टुमारो आफ्टरनून. ओके सर, आफ्टरनून 1 to 2:30. 1 to 2:30 कर लेंगे कल. मैं इंफॉर्मेशन देता हूं सर आपको. ओके, बाय बाय. थैंक यू. आई एम एंडिंग द सेशन.
ओके, आई विल शेयर पीडीएफ, ग्रुप में शेयर करता हूं, अपने केम के ग्रुप में शेयर करता हूं. ओके फाइन. Now, I am not teaching anywhere. I am teaching only at our institute, Kulkarnisir Academy of Mechanical Engineering, KAME. तो already some subjects are over. KAME का advantage क्या है ना, subject wise courses are also available. Okay, चलो, all the best. So from 4th we are starting fluid mechanics at KAME. It will be covered in depth, complete XC, because thermostorm I have covered for complete XC also. Okay, चलो, bye bye. Thank you. कितने आप लिखे? 14,000. No idea, sir. Okay, bye bye. I'm ending the session. Bye bye.